number and that is ending in 5. You know the answer, that is what? 625. How are you getting this one? Like first multiply 5 and 5, what will you get? 5 into 5 is what? 25. Then do what? Increase 1 in that first number. If they are same, increase 1 in that number. What it is? 3. And 2 3s are what? 6. Like that you can do any one. Like 55 into 55. What will you get? 3025. 95 into 95. What will you get? 25 and 90. 9025. Right? So this is the trick when you have to find the square of a number that is ending in 5. That has unit number or unit digit is 5. One more multiplication trick is there. Suppose you have to multiply 12 into 3. You have to multiply 12 into 3. Then how will you multiply? Suppose you have to multiply 12 and 30. 12 into 30. Then how will we multiply? We will multiply like we will study the table of 13. Then we will write like that. But there is another method. Maybe you know, like 12 into 13 you want to multiply. First do what? Multiply these two digits and write whatever comes. 2 3 is what? 6. Then do what? Multiply like that. 2 1s are 2 and 3 1s are 3. Okay? 2 and 3. 2 multiply it diagonally, then add the results. 3 1s are 3 and 2 1s are 2. 2 plus 3 how much? 5. Then multiply like that. 1 1s are 1. That is 156. Right? You can multiply like this. You can take any number that you want to multiply. Suppose you know the what is 12 square, you know the answer. 12 square is 144. Suppose you don't know, then you can do what? You can multiply. 2 2s are 4, 200 2 and plus करेंगे तो 4, then 1 1 जा 1, 144. Similarly, you can multiply the numbers of 3 digits also. Like they are having 2 digits. Like that you can multiply the number that are you can multiply the two numbers that are having 3 digits. Like 1 2 3 and 3 2 1. You have to multiply these. The same process. What you have to do? First multiply these two. First process is what? Suppose this is the like this. So first step is what? First step is like multiply these two and write here. Then second step is what? 1 2 3 1 2 3. Multiply like diagonally and add them and write whatever in second place. And also add the carry off here. If you get the carry here, because sometimes you will get two digits number while you are multiplying like that. Then third step is what? You have to do what? Multiply diagonally and this. And multiply then diagonally and take the results and multiply straight and take the result. Then sum it up. नहीं देख रहे? थर्ड स्टेप क्या है आपकी? ये अब इसको हम करेंगे तो आपको समझ में आएगा. आपको क्या करना है? थर्ड स्टेप में ऐसे मल्टीप्लाई करना है. अगर कुछ नंबर है और ऐसे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन का जो भी रिजल्ट होगा उसको सम कर देना है. तो फिर यहाँ फर्स्ट प्लेस पे पता चल गया, सेकंड प्लेस पे पता चल गया, थर्ड प्लेस पे क्या आएगा ये हमको पता चलेगा. कैरी आया तो वो आगे फॉरवर्ड हो जाएगा. ठीक है? हाँ, वो आगे वाले डिजिट में ऐड हो जाएगा. देन फोर्थ स्टेप क्या रहेगी आपकी? लाइक यहाँ पर हमने 2 आया, 3 आया, फिर अगेन रिड्यूस हो गया यह वाला, अब 2 क्रॉस आएगा. 1 2 3 1 2 3. Now you have to do what? Multiply like that and you have to write the result. Like 3 are already there, 4 will come here and the carry forward will be added to that digit. Then there is also a last step, that is 1 2 3 1 2 3 and you multiply these one and write here. 4 is already there.
4 digits are already there, then fifth one will come. तो अभी ये प्रोसेस आपको लग रहा है कि इतनी सारी स्टेप्स करने हैं, बट आपको वही सब करना है और आपको एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन ना करके आपको सिर्फ एडिशन करना है, छोटे छोटे मल्टीप्लिकेशन करना है, देन एडिशन करना है। लाइक इसमें देखिए क्या होगा, 3 1 are 3, देन क्या करना है, ऐसे मल्टीप्लाई करके 8 करना है, तो 2 3 are 6 and 2 1 2, तो 6 plus 2 what 8, देन क्या करना है, ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ऐसे करना है, तो 3 3 are 9, 9 plus 1 10, 10 plus 2 2 are 4 14, 14 का 4 आएगा एंड 1 कैरी आ जाएगा। देन क्या करना है, ऐसे 2 में लगाना है, तो 2 3 are 6 and 2 1 are 2, 6 plus 2 8 and plus 1 9। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इन दोनों को करना है, 3 1 का 3, रिजल्ट विल बी 3 9 4 8 3, फाइन। So like this you can develop your own trick, you can do by conventional method more than this speed also, but it is practice. It is better if you follow some tricks to solve multiplication, division and subtraction, some short methods, because you will get the results frequently. So we will continue with our topic. We have done the practice session of what your number system, how to simplify, how to apply division rule, how to calculate sum of series, like that question. Today we are going to go into the new topic, that is LCM and HCF. But before LCM and HCF, I want to ask you how to calculate prime factors of any number. You know how to calculate the prime factors of any number. You know what are prime numbers and yes, कोई भी जैसे मैंने आपको नंबर दिया 8 के प्राइम फैक्टर्स बताने हैं, तो आप क्या बोलोगे 2 2 into 2, that is only prime numbers will be there. Like if you say 4 and 2, then your answer will be wrong, because 4 is not a prime number, it is a composite number. So you must know how to calculate the prime factors. So we are going to deal with prime factors, and we will move into LCM and HCF. Write down the heading prime factorization. Suppose you know what is factor and what is multiple. Factors are what less than that number, and multiples are what more than or equal to that number. Like the factors of 4 is on 6 is factor of 6 is 2 and 3. Prime factor of 6 is 2 and 3. And the multiples of 6 is what 6, 12, 24 like that. Right? So you know very better like what is multiple and what is factor. You have to suppose you have given a question to find the prime factor of 84. What will be prime factors of 84? Can you tell me? What are the prime factor? Prime factor of 84. 2 2 3 7. So what is the process to calculate the prime factors of any number? First choose the smallest prime factor that can divide it. Right? So what will be the smallest prime number? That is 2, that can divide it. So choose 2 and divide it. What will you get? Now again what will be the smallest prime factor? Again 2. What you will get 21. Then what will be the next prime factor that can divide 21? 3. So will we continue or will we stop now? So we will stop now, because we are getting in both legs prime number. So we will do that process until the second leg also gets the prime number in it. Right? So what are the prime factors of that? You can write like 2 into 2 into 3 into 7. 84 is having 4 prime factors. Right? Like that, calculate the prime factors of 3150. Prime factors of 3150. What are the prime factors, or how many prime factors does 3150 have?
have given reduce question, write down a question, reduce the fraction is there 2850 upon 3150 to its lowest term, मतलब इसको आपको ऐसे करना है कि जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, केवल लोएस्ट इसको टर्म में आपको कन्वर्ट करना। तो आपको ऑप्शन भी दिए रहेंगे, लाइक ऑप्शन ए है 285/315, ऑप्शन बी है 19/21 एंड ऑप्शन सी है 21/30 एंड ऑप्शन डी है 3/7। ठीक है, तो आंसर है 19/20। ठीक, तो अभी देखो इस क्वेश्चन को कई लोग कैसे करते हैं एग्जाम में, कभी कभी ये बहुत ही यूजफुल भी होती है ट्रिक। लाइक आपको पता है कि यहाँ पर जो भी नंबर्स हैं वो इसी में से कैंसिल होके निकले, लाइक इसके फैक्टर होके हो, तो कई लोग क्या करते हैं कि न्यूमरेटर में जो ऑप्शन में है उससे न्यूमरेटर को डिवाइड करके देखते हैं और डिनोमिनेटर में जो नंबर है उससे डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं। और लकीली जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उनमें सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा होता है जिनमें ऐसी सिचुएशन बनती है। जैसे इसको बोला कि लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करो, तो इनमें से कोई लोएस्ट टर्म होगी। और एग्जाम में अधिकांशतः ऐसे क्वेश्चन बनता है कि जो लोएस्ट टर्म होती है केवल उसी से ही इसमें डिवीजन होता है, लाइक जो न्यूमरेटर वाला है वो न्यूमरेटर को पूरी तरह डिवाइड कर देगा और जो डिनोमिनेटर वाला है वो पूरी तरह डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देगा। बट कुछ क्वेश्चन जब आपको कैलकुलेशन करने के लिए दिए जाते हैं तो मे बी ऐसे मोर देन वन ऑप्शन हो सकते हैं जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर रहे हैं, जैसे हमारे केस में हो रहा है, लगभग सभी ऑप्शन डिवाइड कर रहे हैं। तो उस केस में फिर आपको क्या कैलकुलेट करने पड़ते हैं, प्राइम फैक्टर्स। न्यूमरेटर के प्राइम फैक्टर्स निकाल लो और डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स निकाल लो, और जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे, जो कॉमन नहीं होंगे केवल वही वाले बचेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपका 2150 है और 3150 है, इनके क्या निकालना है आपको, प्राइम फैक्टर्स निकालना है। और जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स होंगे वो तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है तो कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा जो वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आप लोएस्ट प्राइम फैक्टर चुनोगे जिससे ये क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो वो क्या होगा आपका 2 ही होगा क्योंकि 0 यूनिट डिविजिटर डिवाइड हो जाएगा। तो कितने टाइम्स जाएगा इसमें, 1575। देन इसमें भी आप 2 से ही करोगे, इसको चलो पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। अभी किससे डिवीजन होगा इसमें बताइए, 3 से हो जाएगा क्या, है ना, 3 से भी हो जाएगा, 3 5 15। अब किससे होगा, अगेन 3 से हो जाएगा क्या, हाउ मेनी टाइम्स, 3 7 5। अभी भी हो जाएगा क्या, अब नहीं होगा, तो अभी 5 से करोगे कितने टाइम जाएगा, 35। ठीक है, अभी फिर से 5 से चला जाएगा, कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम्स। ठीक है, तो ये आपका प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट हो। अभी हम इसके प्राइम फैक्टर्स देखते हैं तो क्या आएंगे, क्या आएगा यहाँ पे, देन आप इससे जाएगा, 3 से जाएगा क्या इसमें, हाउ मेनी टाइम्स, आप किससे जाएगा, 5 से, आप किससे जाएगा, ठीक 19 तो अभी इसमें देखो कि क्या क्या कॉमन है, 2 दोनों में कैंसिल, 3 दोनों में कैंसिल, 5 दोनों में है कैंसिल, 5 अगेन दोनों में है कैंसिल। बचा क्या है उसमें, 19 बचा है, इसमें 7 और 3 बचा हुआ है। और आपका कैसे था ये फ्रैक्शन, आपको कैसे दिया था कि 2850 अपॉन 3150 को क्या करना है, लोएस्ट टर्म। तो आपको
19 बचा है, बाकी सब तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा जब इसके प्राइम फैक्टर्स हम जोड़ेंगे। और इसके बाद यहाँ पे क्या बचा है 7 और 3 बचा, तो 7 × 3 क्या होगा 21। तो आपका आंसर क्या होगा 19/21, दैट इज बी ऑप्शन। दिस इज द यूज ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। राइट द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following has least number of divisors? You have given the options and they have asked you that which of the following has least number of divisors? Option A is 27, option B is 90, option C is 84 and option D is 29. डिवाइजर्स क्या, जिससे इसमें डिवीजन हो सके इन नंबर्स में, ठीक है। तो इनमें से वो कौन सा नंबर है जिसके पास सबसे कम डिवाइजर है, मतलब सबसे कम संख्याएं हैं जिससे इनमें भाग जा सके? कौन होगा? 29। तो डिवाइजर्स एक्चुअली क्या होते हैं? प्राइम फैक्टर्स, है ना। डिफरेंट डिवाइजर्स जो होते हैं वो प्राइम फैक्टर्स होते हैं। तो सभी के प्राइम फैक्टर्स अगर हम देखें तो इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा? इसके कितने प्राइम फैक्टर है? 3, ठीक है। इसके बाद अगर इसका देखें तो कितना होगा, कितनी बार जाएगा? देन ठीक है, तो इसके 4 प्राइम फैक्टर। देन इसके लिए अगर आप देखो तो इसके भी 4 प्राइम फैक्टर हो गए। तो अभी सबसे कम किसके डिवाइजर है? 27। अभी लास्ट वाला भी चेक करते तो हमें क्या समझ में आता है? 29 तो खुद ही प्राइम है, इसका तो एक ही डिवाइजर होगा। मतलब इसमें आप किससे भाग दे सकते हो? ज़्यादा से ज़्यादा 29 से दोगे तो इधर एक आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे कम डिवाइजर जिसके हैं वो कौन से नंबर है? वो 29। तो दिस इज द वे टू कैलकुलेट द प्राइम फैक्टर्स एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर प्रिपेयर्ड ऑन दिस वन। देन we move to the our topic, that is LCM. What is the full form of LCM? Least common multiple, right? So you know what is multiple and what is factor. We are studying now LCM and the full form is least common multiple. Least common multiple. Suppose I asked you what is the LCM of 10 and 50. What will be the LCM of 10 and 50? LCM. See, name is least, but result is not least. And in LCM, name is highest, but result is not highest. What? 5 into how much it is? 30. See, they are asking you multiple, and that should be common. That should be common. Multiple, not factor. You know what is multiple? Multiple is always more than that number. That means LCM would be more than 10 and 50 because LCM is multiple. Okay? Is 30 common in both? Yes. Very good. So, how you calculate the LCM? LCM is least common multiple. First, calculate the multiples. Like, what will be 10 ones are 10, 10 twos are 20, 30, 40, and so on. Like that in 50, 30, how much? 45, how much? 60. Now, look for the common, least common multiple. मतलब कि अभी आप सबसे least देखो तो 10 और 15 है, but common नहीं है, तो ये LCM नहीं हो सकता। 20 देखो तो इसमें कॉमन 20 है, देन 30 गया और इसमें भी 30 है, तो दिस इज 30 इज द नंबर दैट इज लीस्ट एंड कॉमन इन बोथ. सो व्हाट इज एलसीएम ऑफ 10 and 15? Right? This is the meaning of LCM. So you know how to calculate the LCM. I need not to tell you how to calculate the LCM. You can calculate the LCM by factorization method or by division method. You know how to calculate the LCM.
largest in value. You have given three fractions: 1 by 3, 5 by 9, 4 by 27, and they are asking which is largest. Which is largest? This is the question. Which is the largest? What is the answer? 1 by 3 is the largest. 1 by 3 or 5 by 9? 5 by 9. So see, अभी इसको देख के you can't decide which is the largest because you are not getting. Suppose ऊपर को एक जैसा होता तो हम नीचे वाले को देख के डिसाइड करते. अगर नीचे एक जैसा होता तो ऊपर वाले को देख के डिसाइड करते. ठीक है. सपोज ऊपर 1 1 1 होता तो इसी बता देते हैं कि 1 by 3 सबसे बड़ा है ना. और अगर सपोज नीचे एक जैसा होता 3 3 3 होता तो इसलिए बता देते 5 by 3 बड़ा होगा. ठीक है. बट अभी ऊपर भी डिफरेंट चीज है और नीचे भी डिफरेंट चीज है. तो अभी आपको क्या करना है, किसी एक को एक जैसे बनाना है. चाहे तो न्यूमरेटर को एक जैसे बना लो, चाहे तो डिनोमिनेटर को एक जैसे. तो हम इसको एक जैसे बना लेते हैं डिनोमिनेटर. ठीक है. तो अभी देखो आपको एक जैसे कैसे बनाना है, एलसीएम का विद द यूज ऑफ एलसीएम. लाइक 3 को भी 27 बना सकते हैं, 9 को भी 27 बना सकते हैं. 27 से 27 है. तो हमें क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है उसको एक जैसे बनाना. और एक जैसे कैसे कि इन तीनों का जो एलसीएम होगा वो वैल्यू हम यहाँ पे बनाए तो आसानी से बन जाएगी. ठीक है. तो 3 9 और 27 का एलसीएम 27 ही होता है. ठीक है. तो 3 को 27 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 9 का मल्टीप्लाई. ठीक है. तो ऊपर भी आप 9 मल्टीप्लाई करोगे. 9 को 27 बनाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करना है, 3 का. तो ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई करो. और यहाँ तो ऑलरेडी 27 है. ठीक है. तो ऐसा नहीं मैंने यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई कर दिया तो इसमें वैल्यू चेंज है. क्यों? क्योंकि ये वही चीज है. 9 9 कैंसिल हो जाएगा, वही चीज है. 3 3 कैंसिल हो जाएगा, वही चीज लिखी है, हमने कोई चेंज नहीं. ठीक है. तो अभी ये आपका क्या हो गया, ये हो गया 9 by 27, ये हो गया आपका 15 by 27 और ये आपका 4 by 27 ऑलरेडी था. तभी आपका डिनोमिनेटर सब में एक जैसा हो गया. तो अभी आप डिसीजन ले सकते हैं कि वही बड़ा होगा जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा. ठीक है. और वही छोटा होगा जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा. ठीक है. तो सबसे बड़ा कौन है, एंड ये क्या था हमारा 5 by 9. दिस इज आवर आंसर. दिस इज द यूज ऑफ एलसीएम. Then we will move to the next topic, HCF. Write down HCF. What is the full form of HCF? Highest common factor. So it is what? It is factor. Highest common factor. Suppose you are asked to find the HCF of 10 and 15. How would you find? 10 and 15. So first what you have to do, you have to calculate the prime factors of 10 and 15. Factors are what that can divide that numbers, right? So what would be the factors of 10? That is 1 तो सब में रहते ही, 2 भी होगा, 2 से इसमें डिवीजन हो जाता है. देन नेक्स्ट वन है 5, देन नेक्स्ट वन है 10. ये सब इसके फैक्टर्स हैं. 15 के फैक्टर्स 1 तो रहेगा ही, 3 हो जाएगा, देन व्हाट 5, देन व्हाट 15. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर that is common and that is highest. No other highest value will be common except it, right? तो यहाँ पर और भी चीजें कॉमन हो सकती हैं, बट हमको हाईएस्ट वैल्यू चूज करना है जो कॉमन है. तो अभी हम यहाँ पर देखें तो 1 तो सभी में कॉमन रहता है. तो अगर आप HCF की बात करें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ
10 and 15 if you want to get, what is common? 1 is common, and what is common? 5 is common. Only take only that values that are common. So what will you get? 5. LCM is 5. So you can also find the HCF by two methods, that are by prime factorization method and by division method. So how will you get the HCF by factorization method and by division method? Let us see. LCM जैसे कि 10 और 15 का रूट मुझे छोटा डिजिट है इसलिए इससे निकल गया थी, लेकिन अगर दूसरा बड़ी डिजिट दे तो उसमें तो बहुत टाइम लगता है ना। Yes, you have to calculate the prime factors first, both of them, and whatever will be the common factors. Let us do one. Then you have calculated in your 8th class also the division method. Suppose you have 80 and 90. You have to calculate the LCM of that. What you do? You start dividing by a smallest number. 4 digit ऊपर आ गए, 5 digit ऊपर आ गए। 4 digit और 5 digit आ गए। बहुत लंबा पड़ जाएगा। हाँ नहीं, एग्जाम में इतना लंबा नहीं आएगा, और आता भी है तो आप कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। जैसे अगर आपको समझ में आए कि दो नंबर ऐसे हैं कि पहले वाले में से दूसरा नंबर डिवाइड हो रहा है, अगर दो नंबर का आपको एलसीएम चाहिए, सपोज एक 4000 है और एक 200 है, ठीक है, तो आप जानते हो 4000 को 200 डिवाइड कर ही देगा, तो एलसीएम क्या होगा? 4000, ठीक है। एक्चुअली एलसीएम निकालने की जरूरत ही नहीं रहती। जैसे आपको डिनोमिनेटर इक्वल बनाना है, तो कोई भी एक ऐसा नंबर चूज कर लो जो सभी के मल्टीपल में आ सकता है। लाइक आपको 4 है, देन 10 है, देन 15 है, तो आपको पता है कि इन सब में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके मैं 60 बना सकता हूँ, ठीक है। तो ओनली डिनोमिनेटर को 60 बनाने के लिए अब आपको डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में किससे मल्टीप्लाई करना है, बस वो चेंज कर दो। एलसीएम निकालने की इतनी जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। इन केस कभी निकालना पड़ जाता है तो वो भी आप आसानी से निकाल सकते हो, बाकी इतना लेंथी एलसीएम निकालने के लिए नहीं आता, ठीक है। एचसीएफ में जरूर निकालने के लिए कभी जरूरत पड़ जाती है तो मेथड देख लो। तो राइट डाउन कैलकुलेशन ऑफ एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अभी आपको क्वेश्चन है कि 28 एंड 42 का एचसीएफ पड़ता है। एचसीएफ ऑफ one is what? One is factorization method. Factorization method में आपको क्या करना है? कुछ नहीं, 28 और 42 के सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकालना, ठीक है। तो 28 के प्राइम फैक्टर्स अगर आप देखो तो क्या होंगे? 2 into 2 into 7, और 42 के अगर आप देखो तो क्या होंगे? 2 into 3 into 7, राइट। अभी एचसीएफ आपको पता है क्या होता है कि कॉमन फैक्टर्स होते हैं। अगर इसके फैक्टर 28 के देखे तो 227 और इसके देखे तो 237, तो कॉमन क्या है? 2 है, इसमें भी 2, 7 है, इसमें भी 7। तो ऐसे नहीं कि एचसीएफ के लिए आप ये 2 दो बार लिखो, जो कॉमन है उसको सिर्फ एक बार लिखो, ठीक है। कॉमन को एक बार लिखो, देन इनटू 7 कॉमन है तो 7 को एक बार लिखो। दिस इज द एचसीएफ फॉर 40, हाँ, डिवीजन रूल। तो ऑलवेज फॉलो डिवीजन रूल, डोंट फॉलो दिस रूल, बिकॉज डिवीजन रूल जो है वो आपको बहुत जल्दी हो जाएगा। एक पहला रूल समझ में आया क्या? इसके बाद डिवीजन रूल से आप एचसीएफ कैसे निकालोगे? देयर आर अ प्रोसेस दैट यू हैव टू फॉलो। देयर विल बी 2 numbers या more than 2 numbers that you have given to find the HCF. Suppose the number is 28 and 42. First step is what? Divide greatest number by smaller number. Right? Divide the greatest number by smaller number. If the largest number is completely divisible by smaller number, then smaller number will be what? HCF. If it gives you remainder, then divide smaller number by remainder, like that. Suppose इसको आप 28 से करोगे तो how many times इसको करना पड़ेगा आपको? 1 टाइम only है ना, तो यहाँ पे 28 आएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा आपका? 40। Now you get the
आर ठीक है. तो डिवीजन मेथड इज बेटर देन फैक्टराइजेशन मेथड. Tell me the SCF of 100 and 125. SCF of 100 and 125. 25. How much? 25. Very good. So divide 125 by 100. 1 times it will cancel and 25 will be remainder. When you divide 100 by 25, it will be completely divisible. Like that, you are getting the SCF 25. Right? Can you tell me? You know the prime numbers. ठीक है? So what will be the LCM of prime numbers? Prime two. You are having two prime numbers. What will be the LCM? 6. 1 multiplication. Yes. So whenever you are getting prime numbers and you are asked to calculate LCM, LCM would be nothing but product of these two numbers. Like you have given 5 and 11. Both are what? Prime numbers. So LCM, write down LCM of prime number is product of that numbers. Suppose you are asked LCM of 5 and 11. What will be LCM? LCM will be nothing but 5 into 11, that is 50. So LCM of two prime numbers is product of that numbers. What is the LCM of co-prime numbers? What is co-prime numbers? 8 and 11. That are having only one common factor, that is 1 only. But both number are prime, it is not necessary. One number can be composite, one number can be prime. Right? But what is the condition that they must be having only one common factor, that is 1. So co-prime numbers, these are for prime numbers. और अगर हम co-prime की बात करें, suppose let us take one is 6 and one is 7, and you are asked the LCM of 6 and 7. So you can say 6 and 7 are what? Co-prime numbers. 6 is not prime but is composite, but in together they are forming a pair of co-prime numbers. Right? So in case of co-prime numbers also, the LCM of co-prime number is product of these numbers only. Right? Product of these numbers. 14. Product of two co-prime numbers will give you the LCM. What will be the SCF of prime numbers? What will be? 1. Very good. Because prime numbers having no common factor in it. Right? Suppose you are asked the HCF of 5 and 11. And HCF is what? Highest common factor. And they are having nothing common except 1. So what is the HCF 5 and 11 is 1. What is the HCF of co-prime numbers? Again 1. Because in 6 and 7 nothing is common factor except 1. So again the HCF of co-prime number will also be what? 1. Write down one question. One more relation is there. You must be knowing that relation. That is product of two number is equal to product of their LCM and their SCF. Yes, write down that relation also. This is important relation. Sometimes direct the question is asked based on that relation. One more relation is there. Suppose A and B are two number, then their product will be equal to HCF of A and B into LCM of A and B. मतलब कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, प्रोडक्ट होता है, वो उनके लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के प्रोडक्ट के बराबर होता है. Write down next question. The ratio of two numbers. The ratio
is 4:5. The ratio of two numbers is 4:5. And their HCF is 6. And their HCF is 6. What is the LCM? You have to tell what would be the LCM. Option A is 140. Option B is 120. Option C is 100. Option D is 130. You have been asked the LCM. What is answer? 120. Very good. So they are giving you the ratio. Fine. Suppose you are having a number 15 and a 10. I said you are having numbers such that they are having ratio how much? 2:3. अगर आपके पास 10 रुपए और 15 रुपए है तो मैं बोलूँगी कि आपके पास 2:3 रेशो में पैसे. मैंने कैसे बोला ये? क्योंकि मैंने जो कॉमन मल्टीपल था उसको मैंने हटा दिया. And what is that common multiple? That common multiple is highest common factor. This is what HCF. Right? तो इसको आप समझो ऐसे. आपको रेशो दिया है 4 and 5. तो वो नंबर 4 और 5 तो होगा नहीं क्योंकि रेशो. तो वो नंबर कुछ ऐसा होगा कि उसमें कुछ कॉमन फैक्टर होगा. Maybe that common factor will be x or y, whatever variable you take, you can take. And this x is what? This x is the highest number that is common in both. That's why we have cancelled that. ठीक है? तो ultimately उनको क्वेश्चन में उन्होंने बता दिया है that highest common factor is what? 6. They have given you the value of x. So you got the value 6. Now, what are the numbers? So you can easily calculate the LCM now. What are the numbers? 24 and 30. And what is the LCM of 24 and 30? You can find it. Or you now what? Suppose you don't want to get the number, you can find directly also. You know the relation. What is the relation? Product of the numbers is equal to LCM into HCF. Fine. LCM into HCF. And what is the HCF? HCF you have given 6. You have to find what? And you know what is x. This is also 6. Like that, 1 6 will be what? Cancel now. And what will be LCM? 100. 4 into 6 into 5. Got it? LCM is 100. So there are many ways to find the answer. Only that you know the logic. What they have given in question. Write down next question. Sometimes they ask you the HCF of some fractions. Okay, they have given you 3 fractions and they are going to ask you the HCF and LCM of that fraction. So how will you calculate the HCF and LCM of that fraction? Fine. So write down the formula to calculate the HCF and LCM of fraction numbers. Suppose you have given 3 fractions like that, a by b. There are 3 fractions, a by b, c by d, and d by f. Like that, 3 fractions are given to you. You have to calculate the HCF of that fractions and LCM of that
of them. What is the HCF of this fraction? That is HCF of A, C, E and LCM of B, D, F. Got it? What is the formula? And if you are asked LCM, then you have to do what? You have to calculate LCM in numerator A, C, E and HCF of B, D and F. These are the formulas. There is a question. What is the LCM of following numbers? You are given some numbers and you are asked to find the LCM of these numbers. What is the LCM of the following numbers? And write down the numbers. What are numbers? 2 to the power 3 into 3 to the power 3 into 30. This is the first number. 2 to the power 2 into 3 into 5 square into 13 square. This is the second number. And the third number is like that. 2 into 3 into 5 into 11. You have to find the LCM of these numbers. Options are like that. You have to find the LCM. A option is 2 to the power 2, 3 to the power 3 into 30. B option. Is 2 to the power 3 into 3 to the power 3 into 5 square into 11 into 13 square. You have C option. You have the option none. So if you are given the question like that, like 5 factors are given already, then you have to do what? You have to choose what is LCM? Least common multiple. Right? To find LCM, you have, if you have given the factors, what you have to do? First choose all the common factors, right? And take the highest power of, suppose 2 is common in all. So which 2 you have to choose? The 2 that is having highest power. So which option is having that option? This. Then you have to take the 3. You have to take all the factors. All factors, whatever the factors these numbers are having, all factors would be included in LCM. Fine. In LCM, like in LCM, all factors doesn't come. But in LCM, all factors doesn't come. But in LCM, all factors are included in what? LCM. And that factors would be included that is having highest power. Like 2 is in all, but which 2 we would choose that is having highest power. We go to 3 and which 3 we will choose that is having highest power. Then what is 13? 13 is also there. But which 13? That is having highest power. Then 5 will be also there. But which 5? That is having highest power. Then 11 would be also there because 111 is also there. So 11 would be there. All the factors are included and with highest power. That is your LCM. But in case of HCM, it just inverse. What happens? You will choose only common factors that are common in both 3. Right? And that is common in all 3. That only you have to choose. Right? So what would be the HCM of this? Can you tell me? That is common in both. Like 2 and 3 is common in this, 2 and 3 is common in this, and 2 and 3 is common in this. Okay? If you think of 5, 5 is not there. If you think of 13, 13 is not there. 11, 11 is not there. If you think of 2 square, then 2 square is fine there and 2 square is also there. But 2 square is not there.
option D is 275. What would be the answer? See, when decimal numbers appear in case of LCM, then first do what? First convert them into what numbers? How? Like choose a number that is multiplied to these numbers, then they will be converted into a whole number, like without decimal. 2.75. Okay, let us see. Suppose इसको हमको क्या करना है, बिना डेसिमल के हमको सॉल्व करना है. Yes, very good. This is the answer. So you have to do what? You have to change these numbers. So 1.25, if you multiply by 100, you will get what? 125. So you do what? You multiply all these number by 100, and in last you will do what? When you get the LCM, divide by 100 again. है ना? This is the method. First convert them into without decimal, and then when results occur, do the same thing again, but just invert. When you do multiplication, there you will do division. So in that case, 2.75. If you multiply by 100, you will get 275. And in case of 0.5, you multiply by 100, you will get 50. So now you have to calculate the LCM of what? LCM of 125, 275 and 50. Instead of calculating in decimal, you have to calculate in numbers. Like 125, 275 and 50. How will you calculate the LCM? Choose a common number that can divide the all. Which is that 5. So what will come here? What will come here? 7 आएगा यहाँ पे. Then what will come here? 10. ठीक है. अभी भी ऐसा नंबर कौन है जो तीनों को डिवाइड कर दे? That is. Then अभी ये तीनों ही क्या है? प्राइम नंबर्स. अभी आपको तभी तक करना है जब तक यहाँ प्राइम नंबर्स हैं. ये तीनों ही आपके प्राइम नंबर्स हैं. ठीक है. तो अभी आपको आपका LCM पता चल गया. LCM इज व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ दीज प्राइम नंबर्स. ठीक है. तो इन सभी का आप प्रोडक्ट करोगे तो आपको आंसर क्या मिलता है? LCM is equal to 5 into 5 into 5 into 11 into 2. This is the LCM. And if you multiply them, you will get 2750, because each option is giving you 2750 in the sum and without the sum. That's why this is surely sure that you will get 2750. Now it can't be answered because your numbers are in decimal. So you have to do what? If you multiply this number by 100, then you divide these results by 100. So what will be the answer? Divide that number by 100. You will get 27.5. And this is your answer. Write down next question. Similarly, you can calculate the HCF. First do what? Multiply by that number and at last divide by that number. Whatever the HCF, divide that HCF by 100. Write down a question. The HCF of three numbers. The HCF of three numbers is 70. The HCF of three numbers is 70. The three numbers are in the ratio. The three numbers are in the ratio 1:2:5. 1:2:5. What are the numbers? You have to find what are these numbers. Option A 17, 46.
क्वेश्चन देखिए, सबसे पहली चीज तो 1:2:5 के रेशियो में आना चाहिए। तो 3 नंबर्स हैं, तीनों में से एक ऐसा होगा कि उसको कॉमन फैक्टर डालो तो 1 बने। तो कौन सा, अगर आप 17 देखो तो 17 का डबल क्या होना चाहिए, फिर 34 होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, 17 का 5 टाइम्स होना चाहिए यहाँ पे। तो इस टाइप से आपका बनेगा, लेकिन ऐसा कोई यहाँ पे नहीं बन पाया। और दूसरी चीज, इन्होंने एचसीएफ ऑलरेडी बोल दिया कि एचसीएफ कितना है, 17 है। तो सभी नंबर 17 से डिवाइड होना चाहिए। तो इसमें भी ऐसा एक नंबर तो है जो 17 से, क्योंकि एचसीएफ ऐसा है जो तीनों को ही डिवाइड कर देगा। तो इसमें तो चला जाएगा बट इसमें नहीं जाएगा, इसमें तो चला जाएगा बट इसमें डिवीजन नहीं होगा, इसमें चला जाएगा बट फिर इसमें नहीं जाएगा। ठीक है, तो आपको फिर क्या आंसर देना है, नल। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने बोल दिया एचसीएफ 17 है। ठीक है, और एचसीएफ जब 17 है तो एचसीएफ तो सभी नंबर से डिवाइड कर सकता है, क्योंकि वो उन्हीं का फैक्टर है। लेकिन इसमें ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है जो सभी को सभी 17 से डिवाइड हो। तो जब ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है तो हमारा आंसर होगा नल। ठीक है, राइट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। The product of HCF and LCM of two numbers. The product of HCF and LCM of two numbers is 112. The product of HCF and LCM of two numbers is 112. Fine. The difference between the two numbers is 6. The difference between two numbers is 6. So you have to tell what are these numbers. Option A 8 and 40, option B 9 and 50, option C 10 and 60, and option D 7 and 30. See, they have given you two hints. Fine. So you can go through options also, verifying that hints, or you can solve by conventional method. 8 and 40. 8 and 40. Good. Fine. See, they have given you what the hint, that is the difference between them is 6. So this is also having the difference. This is also. But by this method you can't get the answer. By this hint. So what is the second hint? That is the product of HCF and LCM is 112, and you know the relation, product of HCF and LCM is nothing but product of these numbers. उन नंबर का प्रोडक्ट ही HCF और LCM का प्रोडक्ट होता है, और HCF और LCM का प्रोडक्ट तो आपको दिया ही है 112, है ना। तो आपको क्या वेरीफाई करना है कि वो दो नंबर कौन से जिनका मल्टीप्लाई करने पे 112 आता है। तो वो नंबर से आप इसका मल्टीप्लाई करोगे 112 नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी आएगा। केवल यही ऑप्शन है जो आपको वो एक प्रोडक्ट करने पे 112 देते हैं। और ये हमको कैसे पता चला, क्योंकि हमें पता है कि HCF और LCM का प्रोडक्ट नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है, इसलिए हम इनका मल्टीप्लाई करके देखें, जो होगा 112 वही हमारा आंसर होगा। तो उसका हमारा आंसर क्या है, 8 and 40. Like that you can solve that questions. Write down next question. The greatest number that can exactly divide 124, 140 and 204. The greatest number that can exactly divide 124, 140 and 204 is A option 2, B option 4, C option 8, D option 16. This question you also can do by the options. Don't need to apply more mind.
Divide by 2, it will be dividing. You know, divide by 4, it will be also dividing. But 8 is not going to dividing all. 16 is not going to divide all. So how will you calculate in case of if you are having 3 numbers and you have to calculate the LCM? How will you solve by division method? First, choose 2 numbers that are highest. That is 140 and 204. Divide 204 by what? 140. What will you get? 64. Now divide until you get the remainder 0. Now divide by remainder to 140. How many times will you study? 4 times? 2 times. What will you get? 12. Now divide 64 by 12. What will you get? 60. What will you get? 4. Now divide 12 by 4. So it will be giving you the 0 remainder. So SCF of these two is what? 4. Now you got one SCF. Now try for what? 4 and 124. And the SCF of these two will be your answer. So you divide 124 by 4. It will be dividing what? So it is giving you the answer. What is the SCF? 4. And they are asking you highest value that can divide all 3, that is. So in that way you can solve this type of questions. Try the next question. What is the least number? What is the least number that is a perfect square? What is the least number that is a perfect square and is divisible by each of the following numbers? 6, 4, 3. And is divisible by each of these following numbers. And is divisible by each of the following numbers. What is the least number that is a perfect square and is divisible by each of the following numbers? So what will you calculate? LCM or SCF? LCM. When they ask for least number, go for LCM. So option A is 121, option B is 144, option C is 169, and option D is none. So it must be perfect square. All the 3 numbers are perfect square and these must be divisible by 643. You can go through the option, need not to calculate it. Right? So 6 is dividing 8 or not? It is not dividing. So it can't be answered. It also can't be answered. What is the answer? Okay, so this is the answer. Need not to solve it. But you must know what is the concept. They are asking you to calculate LCM, or if you get the LCM, what is the next number that you can multiply to make it perfect square? LCM, surely LCM will be not a perfect square. To make it perfect square, what you should multiply, that you should know. And then if you multiply that number to LCM, you will be getting 1/4. Like so we will, what is the time? Okay, we will continue in next class. Perfect square. What is the LCM of 643? 12. Fine. Is 12 a perfect square? No. So what should we multiply into? Suppose we take the factors of these. What is 6? We can write 2 into 3. What is 4 that we can write 2 into
it also become as 12. Now this number will be a perfect square. Fine. If you are getting the LCM 12, then 12 is not a perfect square. Then what will be perfect square? 12 into 12, 140. And that is only in the